Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we are here with you with an amazing topic, with an amazing host, our very own, very well-known Iram Intisapia. Thank you so much, Iram, for joining us today. Uh, Jazakallah khair, Bushra. Thank you for having me. yeah, Iram is a well-known author, speaker, life coach, and we are here today to gain her insights on a very important topic जो हम overseas के लिए बहुत important है, Muslims community engagement in raising future generations. और कहते हैं कि it takes village to raise kids and it's very true. और जब हम छोटे थे तो पाकिस्तान में या इंडिया में जहाँ से भी हम बिलोंग करते हैं वहाँ पे डिफरेंट तरह का एनवायरनमेंट होता था, अब डिफरेंट तरह का एनवायरनमेंट है। आज हमारे साथ एरम मौजूद हैं, वो हमें ये बताएँगी कि हम अपने इस करंट सर्कमस्टांसेस में जहाँ हम आइसोलेशन में रहते हैं, कैसे अपने बच्चों को एक कम्युनिटी की तरह रेज़ कर सकते हैं। सो वेलकम एरन। Thank you, Bushra. So let's start with the first question. I suppose कि हम कैसे raise कर सकते हैं? Is that the question? Yeah. So the question is actually, I have few questions today. We will dissect the role of parents, community, plus masajid. There are so many things. There's so many aspects to it, right? I will start with the community. I will say why is community involvement essential in the childcare process and how it can benefit both children and families within the Muslim community. Community की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है क्यों? Bismillahirrahmanirrahim. कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बनाया ही ऐसे कि हम लोग जो हैं चाहते ना चाहते हुए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा दीन, अगर हम एक मुस्लिम पर्सपेक्टिव की बात करें तो हमारा दीन हमें सबसे पहले जो हुक्म देता है वो ये है कि हम अपने कैरेक्टर बिल्डिंग में भी जो काम करें वो ये है कि हम दूसरों के साथ अच्छाई में आगे हों। अब अच्छाई का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि अगर कोई मुश्किल में है तो उसके साथ, या अगर कोई ईज़ी है तो सुकून से तो बस ठीक है, अपना-अपना को देखो, मेरी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। वी आर इंटरकनेक्टेड एज़ अ कम्युनिटी। हमें रिश्तेदारियों का पास निभाने के लिए कहा गया है, हमें नेबर का ख़्याल रखने के लिए कहा गया है। जो हदीस है नेबर के बारे में, उसके बारे में जब आप पढ़ते हो तो जो सहाबी जिन्होंने वो हदीस नरेट की है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमें बता रहे थे कि नेबर का कितना इम्पोर्टेंट रोल है, तो हम ना थोड़े से परेशान होने लगे। हमें लगा कि ऐसे इतनी दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिपीट कर दिया कि हमें लगा कि शायद हमें विरासत में उनको कुछ देना होगा अपने नेबर्स को, राइट? तो अगेन नेबर इज़ अ कम्युनिटी। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसलाइन हमारे दीन में ये है कि टेक केयर ऑफ योर ओन एंड टेक केयर ऑफ योर नेबर्स। ओके, फिर अब चाइल्ड केयर प्रोसेस में अगेन जब हम जाते हैं सहाबा कराम और सहाबियात कराम के ज़माने में, तो सहाबा कराम तो हाफ ऑफ द ईयर वो तो गज़वात लड़ रहे थे। जब इस्लाम जो था, जो फैला रहे थे, तो बीबियाँ तो बच्चों के साथ अकेली थीं। बंदे तो सारे जंग पे जा रहे थे। तो बीबियाँ जो थी वो कैसे अपने घरों में क्या बस बैठी हुई थी कि अच्छा ठीक है, मैं अपने बच्चे को पाल रही हूँ सेपरेटली। Was that the case? No, that was not the case. The thing was, जो बुजुर्ग रह गए थे पीछे, जो चाचियाँ, मामियाँ, खालाएँ, neighbors सारी, everybody was contributing into raising the child. Everybody was हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत से बताया है। जब जो सहाबी थे जो उस वक़्त बहुत छोटे थे, जिनका एक बर्ड था और वो बर्ड फौत हो गया था और वो बच्चा जो था वो उदास था उस वक़्त, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, व्हाट डज़ दैट मीन? दैट मीन्स that the adults in the community are supposed to know the children not just by ये उसका बच्चा, ये उसका बच्चा, ये उसका बच्चा, but by their names and by their interests. And that's why we have, अब हमारी मसाजिद में होते हैं जो लोग मस्जिद से कनेक्टेड हैं, जो लोग मस्जिद के प्रोग्राम से कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो फॉर द पास्ट 18 years with my son, for the past 14 years actually, क्योंकि मैं इस कम्युनिटी में पिछले 14 years से हूँ। My daughter was born the youngest one. मुझे उस कम्युनिटी में सर्व करते हुए इतना अरसा हो गया कि मुझे जो इनकी एज ग्रुप के बच्चे हैं ना, उनके नाम पता है, उनके स्कूल्स, उनके टीचर्स, उनकी बर्थडेज, वो क्या खाते हैं, उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। और गेट टुगेदर्स में आई हैव सीन देम ग्रो, and it's a huge boost because every person, even इन लोगों, मेरे अपने बच्चों के लिए, every person brings in different perspective. कभी कोई कुछ सिखा देता है, कभी कोई कुछ बता देता है, कभी कोई कुछ शेयर कर लेता है। बच्चों को याद रहता है, उनकी कोर मेमोरीज में होता है कि अच्छा जो फलाने की मॉम है या फलानी आंटी हैं या खाला हैं, यू नो शी इज सो नाइस, या शी मेक्स सच अ नाइस मील। अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ childhood rearing. Was I able to answer the question? यू आर। अब मुझे बस सिर्फ ये चीज़ फ़ील होती है कि
इट्स नॉट लाइक द वे इट यूज्ड टू बी इन आवर होमलैंड, जहाँ हम वहाँ पे एक जो मोहल्ले का कॉन्सेप्ट था, उसके लिए आपको वो स्पेशली तो मॉस्क बुशरा, जाके हाँ। कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, आपको इवेंट्स की ज़रूरत नहीं थी, आपको स्पेशली डिनर पार्टीज़ नहीं करनी कि कोई आए और आपके बच्चे के साथ इंटरैक्ट करे, तो मुझे इस चीज़ के बारे में डिस्कस करना है कि व्हाट आर द प्रैक्टिकल वेज़ कि हम इस इंटेंशन के साथ मिलें कि हमने मुस्लिम यूथ को सपोर्ट करना है और उनको नेविगेट करना है टुडेज़ वर्ल्ड्स चैलेंजेस। अच्छा, so Pusham, this question has many layers of answers. Number one, अब जो अमेरिकन मुस्लिम्स हैं ना, अगर हम सिर्फ उनकी बात करें, ठीक है? हुँ, तो मैं खुद एक पाकिस्तानी ethnically I'm a Pakistani, but हाँ, I was born raised in Abu Dhabi, but I came हुँ, from a very Islamic country, but हुँ, my deen was not very strong. यहाँ पर आके दीन सीखा। हुँ, जो हम मुस्लिम चिल्ड्रन की बात करते हैं ना, तो हुँ, सबसे पहले तुम और मैं, हम दोनों इस चीज़ को समझते हैं कि एथनिक आइडेंटिटी और अमेरिकन मुस्लिम आइडेंटिटी का आपस में क्लैश है। वी अंडरस्टैंड दैट। राइट, जब हम सिर्फ एथनिक आइडेंटिटी और चूंकि वो मुसलमान हैं और वो वाली गैदरिंग्स करते हैं, तो उसमें जो इस्लाम का जो एस्पेक्ट है वो सिर्फ एथनिसिटी से है। मतलब कि आप चांद सेलिब्रेट करते हो और आप ढोलकियां हुँ, पार्टीज करते हो और आप डांस टमक्का करते हो, और उसमें अगर कोई शख्स जो है एथनिकली इससे अब अलग हो रहा है और जरा इस्लामिक हो रहा है, तो वो खुद ही डिवाइड आ जाता है। ये हलाल, ये हराम, ये दिस, ये दिस, ये दिस, फिर दिस, राइट, ठीक है? ये बिल्कुल सरफेस लेवल की बात है, लेकिन ये ज़रूरी है ये बात करना। उसकी वजह से क्या होता है कि आपका हल्का अहबाब जो होता है, फिर आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ जा रहे हो। माइंडेड मैंने ये नहीं कहा ये गलत है, ये सही है। मैं सिर्फ ये कह हुँ, रही हूँ कि हम फिर हुँ, चूज़ करते हैं कि हम लाइक माइंडेड लोगों के साथ जाएँ। अच्छा, हुँ, एक हुँ, बड़ी मज़े की बात है और मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि हम सारे ये क्यों करते हैं? जहाँ पे देसी देखें, हाय अल्लाह देसी हम खुद क्या है? दैट्स सो ट्रू, यू आर योरसेल्फ। तो तो फिर द थिंग इज़, पेरेंट्स के पास एक ब्रॉडर ग्रोथ माइंडसेट, एक ब्रॉडर व्यू होना चाहिए, जहाँ पे हम दूसरी एथनिसिटीज़ को, जो कि, और फिर मस्जिद इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि हमारा ये ख़्याल है, एंड आई एम सेइंग दिस, इट्स नॉट रिटन इन स्टोन, कि हुँ, हमारा ये ख़्याल है कि जो लोग मस्जिद में आ रहे हैं, जा रहे हैं, या जो उस माइंडसेट के हैं, या जो लोग मस्जिद से कनेक्टेड नहीं हैं, सिर्फ़ ईद की ईद आते हैं लेकिन दूसरे माइंडसेट के हैं, वो लोग चूँकि हमसे सिमिलर हैं, तो वो हमारे बच्चों के लिए सेफ़ हैं। हुँ, वो हमारे बच्चों के लिए सेफ़ है। राइट, मैं तो मस्जिद की, हालाँकि अगेन इसका भी है, आई हैव सीन पीपल कमिंग टू द मस्जिद जी, 5 वक़्त की नमाज़ पहली पहली सफ में खड़े होकर पढ़नी चाहिए, एंड दे आर सो रूड टू द किड्स। दे गिव किड्स प्रॉपर ट्रॉमा, जिस तरह से उनको झिड़कते हैं और डाँटते हैं और कभी-कभी 2 हाथ भी लगाते हैं। किसी का बच्चा यार कैसे उसको मार रहे हो तुम? लेकिन राइट, अंकल्स और आंटीज़ ऐसे करते हैं। राइट, सो राइट, so there is no one प्रॉपर जिसको कहते हैं ना कि एक चेकलिस्ट, हुँ, जो हुँ, चेकलिस्ट फिर हमने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए बनाने के, जो अडल्ट है ना, अल्हम्दुलिल्लाह उसको बेसिक प्रिंसिपल्स का, हमारे दीन का पता हो, हमारी एथनिसिटी के बेसिक हुँ, प्रिंसिपल्स का पता हो, हुँ, लेकिन लेकिन इतना एग्रेसिव ना हो कि उसको हम पे या हमारे बच्चों पे थोपे। हर दफ़ा हम उनके घर जाएँ तो हमें एक लेक्चर ना सुनने को मिल जाए, या हमारे बच्चों को कोफ्त होने लगे कि भई अब इन्होंने हमें बिठा लेना और इन्होंने हमें बताना है कि भई पब्लिक स्कूल कितना गंदा होता है और लड़कियों से दूर रहना और लड़कों से दूर रहना, और ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? या या दूसरा ये कि इतनी फ्री मिंगलिंग हो कि जहाँ पे हमें अपनी बाउंड्रीज़ का ही ना पता चले, ठीक है? हमारी एक अगेन, मैं ये बात बहुत हम्बली कहना चाहती हूँ कि हमारे बच्चे हम नहीं हैं। दे आर अमेरिकन मुस्लिम्स, दे गो टू पब्लिक स्कूल्स, दे गो टू प्राइवेट स्कूल्स, दे गो टू इस्लामिक स्कूल्स, रिगार्डलेस दे आर होम स्कूल्ड, रिगार्डलेस, एट द एंड ऑफ द डे दे आर अमेरिकन। अमेरिकन ट्रू, सोशल मीडिया में, अमेरिकन गेम इंडस्ट्री में, अमेरिकन स्पोर्ट इंडस्ट्री में, अमेरिकन म्यूज़िक इंडस्ट्री में, अमेरिकन हॉलीवुड इंडस्ट्री में जो कुछ होता है, हमारे बच्चों की रियलिटी वही है। और हम दैट पाकिस्तानी ड्रामास बेशक लगा के देखें, दैट्स नॉट व्हाट दे फॉलो। आई एग्री, वो हमारी विशफुल थिंकिंग होती है कि वो हमारी एथनिसिटी और कल्चर को लेके चलें। वो लेके चलेंगे टू सम एक्सटेंट, बिकॉज़ आई आल्सो बिलीव इरम यू आर व्हाट योर किड्स आर टू ग्रेटर एक्सटेंट व्हाट यू आर, वो आपसे बहुत सारी चीज़ें परसीव करते हैं एंड देन दे आर आल्सो इन आर व्हाट देयर एनवायरनमेंट इज़, राइट? हाँ, जिस एनवायरनमेंट हाँ, में आप 7-8 घंटे आप एक जगह पे भेज रहे हैं बच्चे को, तो बच्चा वहाँ से काफ़ी कुछ लेगा। सिर्फ ये नहीं कि हाँ। उसको फिर माँ-बाप की तरबियत असर करेगी। बट आई विल लाइक टू कम टू द स्टार्ट ऑफ द पॉइंट जहाँ पे क्वेश्चन है। आपने ये कहा
कि एथनिसिटी वर्सेस कल्चर थिंग Religion. वर्सेस मुस्लिम आइडेंटिटी, उसमें फिर 2 ग्रुप्स आ जाते हैं। एक जो होते हैं वो कहते हैं हमारा बच्चा जो है वो कल्चर आइडेंटिटी को लेके चले, हमारे लिए ये काफ़ी है। वो पाकिस्तानियत को हाँ, लेके चले या लेकिन अपनी नहीं चलते। मज़े की बात ये है कि नहीं चलते। They're आई एम Americans. टू दैट पॉइंट, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। अगर 2 चीज़ें हैं, एक है कि उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि ग्लोबल मुस्लिम बन जाए। एक ग्रुप होता है जिसको होता है हाँ। ग्लोबल मुस्लिम बन जाए, मेरे लिए ये काफ़ी है। एक के लिए ये है हुँ, कि ग्लोबल मुस्लिम बने या ना बने, वो पाकिस्तानी बन जाए। वो दे बिलीव कि जब वो कल्चर को अडॉप्ट करेगा तो ऑटोमैटिकली हमारे जो कल्चर है टू ग्रेटर एक्सटेंट ज़ाहिर है उसमें इस्लाम का इन्फ्लुएंस है। तो उन्हें ये लगता है कि अच्छा वो अच्छा मुसलमान तो ऑटोमैटिकली बन ही जाएगा। लाइक आई एम जस्ट टेलिंग द I थॉट। know, yeah, I'm just I agree I'm with not your saying thought. it's I my agree thought with what you're perspective. saying. Yeah, Yeah, yeah. yeah. नहीं, नहीं, So what I'm trying to say is we are not here to advocate that what is right and what is wrong. What I'm trying to emphasize on is कि आप जिस भी थॉट से बिलोंग करते हैं, whether आप हुँ, एथनिसिटी वाली थॉट से बिलोंग करते हैं या ग्लोबल मुस्लिम वाली थॉट से बिलोंग करते हैं, डू यू सपोर्ट किड्स विद इन दैट ग्रुप? मुझे लगता है कि इवन विद इन दोज ग्रुप हाँ, देयर इजंट इनफ सपोर्ट। लाइक अगर हाँ। कोई खास दबका है जो अपने आप को कहता है आई एम नॉट दैट मच, हम ज्यादा इस्लामी नहीं है, ये सेंटेंस मैंने सुना है। आप हुँ, ज्यादा हुँ, इस्लामी नहीं है, लेकिन आपका कल्चर ये कहता है। आप जब पाकिस्तान में रहते थे, जहाँ आपने अपना चाइल्डहुड गुजारा था, वहां पे इट टेक्स विलेज, लाइक हमारा टाइटल भी है, इट टेक्स विलेज। आप अपने मोहल्ले से, अपने रिश्तेदारों से, हर एक से कुछ ना कुछ सीख रहे थे। आपके वालिदैन की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये चीज नहीं थी। बट आर यू प्रोवाइडिंग दैट थिंग टू द किड्स अराउंड, even if you emphasize on ethnicity? That is my हुँ। point. There are some people do, again like-minded people do। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल तुम और मैं हैं, हम अपनी पेरेंटिंग की जर्नी पर का को ध्यान दें, तो तुम और मैं सिमिलर बुक्स पढ़ते हैं, सिमिलर हमारी डिस्कशंस होती हैं, हम सिमिलर स्पीकर्स को सुनते हैं, हम चीज़ें आपस में शेयर करते हैं बिकॉज़ वी आर ऑन द ग्रोथ जर्नी। सो Right. देन व्हेन वी सी एन अपॉर्च्युनिटी कि ये मेरे बच्चे के लिए अच्छा है, वी इनवाइट दोज़ एडल्ट्स इनटू आवर चाइल्ड्स लाइफ, ऑफ कोर्स विद आवर ओन सुपरविजन, वी डू दैट। Not everybody is that with that worldview। हम हैं, Right. हमारे इर्द-गिर्द बच्चे हैं, खुद ही सीख जाएँगे, खुद ही नहीं, खुद ही Right. नहीं होता। You have to introduce your children to Yeah. certain people with a certain intention। अच्छा, मैं यहाँ पे मैं रोक के ये भी बोलूँगी, ये बात मुझे पता है, ये बात मुझे समझ आ रही है, ये बात तुम्हें पता है, तुम्हें समझ आ रही है, हमारे बच्चों को नहीं आएगी एंड they won't be very appreciative of it। Right. माइंडेड दे वोंट बी, दे विल थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। लाइक जो Right. लेक्चर मुझे आपसे सुनना है, वो लेक्चर आपने अपने अलावा अपने किसी और से मुझे सुनवा दिया, आपने बड़ा कोई एहसान किया मेरी ज़िंदगी पे, मेरी ज़िंदगी ज़ाया की है, ये भी कह Right. सकते हैं। Right. लेकिन लेटर ऑन इन लाइफ दे विल अप्रिशिएट इट। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, आई 100% एग्री। हम मे भी इस पॉइंट को अभी डिस्कस कर ही नहीं रहे कि बच्चे क्या फील करते हैं। वो तो एक पूरे टोटल उसके लिए एक अलग लेक्चर होगा कि हाउ किड्स हैव दैट आइडेंटिटी क्राइसिस एंड हाउ दे फील अबाउट ऑल दिस थिंग। हम एज अ पेरेंट उन्हें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, और इन द लॉन्गर रन हमें भी बहुत सारी चीजें चाइल्डहुड में समझ नहीं आती थी और बाद में जाके आई थी, तो उन्हें भी हाँ, आ जाएंगी। तो हमारा ये कि हम अच्छा। एज अ अडल्ट, लाइक अगर अगर इरम मेरी नेबर है और इरम के बच्चे हैं कुछ, और मैं अपने बच्चों के लिए कुछ पॉजिटिव कर रही हूँ, तो क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं इरम के बच्चों को भी इंक्लूड करूँ उसमें? ऑल्दो इरम की अपनी एक फिलॉसफी होगी और इंक्लूड ना होना चाहिए, लेकिन टू मेक हर अवेयर दैट देयर इज सम पॉजिटिव प्रोग्राम गोइंग ऑन इन कम्युनिटी, या लेट्स डू दिस पॉजिटिव एक्टिविटी विद किड्स टुगेदर, बिकॉज एक सोशल एस्पेक्ट है जिसमें हमारे बच्चे एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होंगे, थिंग्स लाइक You दैट। have to like you I have to like you for that। कि अगर तुम ये लेकर आओ तो I have to really like you for that। The problem is we miss opportunities because adults don't like each other that much। I mean it's not a bad thing। It's for example दो बहुत अच्छे लोग हैं और उनकी सोच क्लैश करती हैं और उस क्लैश वो एक दफ़ा हुई है, वो 2 दफ़ा क्लैश हुआ, 3 दफ़ा क्लैश हुआ, then you are like you are not so open to the idea of mingling with that specific person or their kids or bringing that person into your kid's life। ये भी होता है। दिस But इज वेरी again, ब्यूटीफुल uh, पॉइंट। एंड सॉरी, आज का टॉपिक ऐसा, आई कैन स्पीक फॉर आवर्स ऑन इट। ओके, वन पॉइंट, ठीक है, हम सिर्फ उन लोगों से मिलेंगे जिनसे हमारा ज़हन मिलता है, क्योंकि ज़ाहिर है ज़हनी मुताबिकत नहीं होगी, आपका अपना फ्रिक्शन हो रहा है, तो आप बच्चों को क्या सिखाएंगे, राइट? हाँ, सो हैव टू हैव अ पीसफुल एनवायरनमेंट। जैसे घर में एक पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए, इसी तरह very well, अमंग्स फ्रेंड्स भी पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए, सो दैट यू कैन ट्रांसफर दोज वाइब्स टू किड्स। बट yes। I'm sorry, I have seen people who are very vibing in, who are having very good time in the party, and मिलते भी हैं, वीकली भी मिलते हैं, लेकिन when it comes to kids, when you're talking about kids, they don't want to open up.
एंड ओपन अप होना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अपने पेरेंटिंग के जो चैलेंजेस हैं वो शेयर कर ही नहीं सकते व्हेन वी आर नॉट वल्नरेबल टू ईच अदर। और शायद हाँ, इसमें कहीं न कहीं जजमेंट वाला फैक्टर आ जाता है, फियर ऑफ हाँ, जजमेंट वाला हाँ, फैक्टर आ जाता है। हाँ, हाँ। क्या ख्याल है? नहीं, नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसको मैं मज़ीद क्या एक्सप्लेन करूँ, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही और सच्ची बात कही है। शेम कल्चर से बिलॉन्ग करते हैं ना हम सारे। तो हुँ, हम खुद वो क्या हमें क्या सिखाया जाता है कि खुद अपना ये कमीज़ उठा के अपना टिड क्यों दिखा रहे हो? हालाँकि दैट्स नॉट व्हाट यू आर डूइंग। बेसिकली यू आर नॉट बिकमिंग नेकेड इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। यू आर जस्ट ब्रिंगिंग क्यों ऑनलाइन ये सारी क्लासेस और इस तरह की कन्वर्सेशन ज़्यादा पसंद की जाती हैं? इतने मील दूर कोई बंदा बैठा मुझे सुन रहा है और मुझे मैसेज कर रहा है कि यू नो व्हाट यू रेजोनेट विद माय लाइफ सो मच। लेकिन मेरी मेरी अपनी बहन के साथ मैं ये चीज़ डिस्कस नहीं कर रही हूँ। हुँ, सेफ्टी या नहीं है, सेफ्टी नहीं है। इवन सेफ्टी नहीं है। So our conclusion is we need to provide safe space to each other as an adult। कि अगर कोई बात हाँ, कर रहा है ना तो हम जज ना करें यार कितना बुरा पेरेंट है। आप कंफर्टेबल करें एंड आई थिंक इट स्टार्ट्स विद योरसेल्फ। आपको हो सकता हुँ, है अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले लेकिन बी वर्नरेबल कि यार आई एम हुँ, हैविंग दिस चैलेंज विद माय किड, ही इज इन टीन्स, तुम्हें भी ये मसला हो रहा है। तो हुँ। अगला यकीन करें अगर वो है ना कि उसे कोई मिले लिसनिंग ईयर तो वो हाँ, करेगा शेयर हाँ, आपसे क्योंकि हाँ, आपने हाँ, पहल हाँ। करी है। लेकिन सम टाइम आपको मतलब बुरा रिस्पॉन्स भी मिलता है, शन कर दिए जाते हो, आप कहते हो नहीं, नहीं, हम भी परफेक्ट, हमारे बच्चे भी परफेक्ट, हमारे हमारी लाइफ आपको ना में कोई आपको ऐसा मसला नहीं अंदाज़ा था। होता है। नहीं, नहीं बुशरा वैसे ना क्योंकि हम स्टार्ट ऑफ अपनी फ्रेंडशिप ऐसे करते नहीं ना। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हें और मुझे ऐसे लोगों का पता है, अच्छे लोग हैं, ये नहीं कि वो बुरे लोग हैं, लेकिन मुझे हुँ, स्पेसिफिकली मेरी 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 करीबी ज़िंदगी में मुझे ऐसे पता है कि वो एक बंदा है, उसने ना कभी ये नहीं कहना कि मेरे बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है। उसने ये कहना कि मेरा बच्चा जो है ना, वो दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा है और उस बच्चे में हीरे, मोती, जवाहरात हैं जुड़े हुए हैं और उस बच्चे से कभी एंड कोई गलती हो ही आई एम नहीं सो सकती। सॉरी, या आई हैव सो मच प्रॉब्लम विद दिस मेंटालिटी एंड आई विल से व्हाई, अब आई विल लेट यू फिनिश। नहीं, नहीं, बस यही है कि उनको खुद ही अपने बच्चे में कोई मसला नज़र नहीं आता, उन्होंने क्या डिस्कस करना किसी के वी साथ। ऑल आर इम्परफेक्ट ह्यूमन बीइंग और बच्चे तो स्पेशली फॉर्म हो रहे होते हैं, दे आर लॉस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, उन्हें बिल्कुल पता नहीं होता एंड वी हम भी फर्स्ट टाइम पेरेंट्स होते हैं एंड यकीन करें हर फेज इज अ फर्स्ट टाइम फेज। लाइक That's you true. see them toddler as a first time, you see them teenager as a first time, you are Yeah, also figuring out it's first time parent thing always, right? it So is. why judging each other, why judging kids? So हमारा conclusive point ये है we provide safe space to each other so that we can open up, be real, talk about Be our real. हाँ, be real, be authentic. Authenticity जो है ना वो authenticity does not come because कोई बस मुँह पे बात कर देता है. That is not authenticity. Authenticity is being uh, objectively honest about your shortcomings and your strengths. ठीक है? When you are comfortable in your own skin तो फिर ईज़ी हो जाता है। ईज़ी हो जाता है बात को सुनना भी, करना भी। Majority of us don't talk to our own mothers or our own sisters because the first thing that will come out of the mouth is तुम्हें तो आदत है अपने आप को ख़ौर करने की। तुम्हें तो बस ख़प्त है। बस तुमने तो बस कोई ना कोई परेशानी ढूँढ के ही रखनी है। kids. यार मेरे अपने इतने मसले हैं, तुम क्यों अपनी बकवास कर रहे हो? मेरे पास नहीं है टाइम तुम्हारे लिए। I mean कुछ भी हो सकता है depending on the situation and the relationship and how the relationship has been over the years, but there's no safety there. एग्जैक्टली अभी हमारा एक कमेंट भी आया है कि कांस्टेंट कंपैरिजन अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स पीपल गो टू द टॉक्सिक लेंथ टू मेक श्योर द किड इज योर किड इज वर्स। मतलब ये होता है, अब बहुत अच्छा फ्रेंड होगा लेकिन वो कहेगा नहीं नहीं मेरे बच्चे में तो ऐसा कोई मसला नहीं, आपको फील होगा यार मैं सबसे बुरी माँ, मेरा बच्चा सबसे बुरा, फिर उसी वक्त अपना जिप कर लेते हो मुंह, राइट? सो या सो आवर कंक्लूसिव पॉइंट अबाउट दिस डिस्कशन पॉइंट इज बी ओपन, बी ऑथेंटिक एंड प्रोवाइड सेफ स्पेस टू अदर पीपल। और आपने कई दफ़ा वर्ड यूज़ किया बी वल्नरेबल एज़ वेल। ये वल्नरेबिलिटी होना बड़ी ज़रूरी है। या ओपन एम्पैथेटिक लिसनिंग ईयर्स एंड वल्नरेबिलिटी इज़ इम्पोर्टेंट टू। एग्जैक्टली और हो सकता है आपको अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले बट यू हैव टू टेक योर चांस समवेयर। हाँ, हाँ और अच्छा मैं एक और बात बता दूँ। हाँ, जब कोई हमारे साथ वल्नरेबल हो रहा था ना फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बुशरा मेरे पास आया, हुँ, मुझे पता है मैंने एक दफ़ा किसी के साथ ये किया था। जानबूझ के नहीं किया था, इट वाज़ जस्ट माय स्टेट ऑफ माइंड। इट वाज़ हुँ, रमज़ान, लास्ट ईयर नहीं, उससे भी लास्ट ईयर या उससे भी हुँ, लास्ट ईयर पता नहीं। हुँ, लेकिन आई स्टिल रिमेंबर इट सो विविडली कि एक खातून है वो मुझसे हर रमज़ान में ही हम ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि हम रमज़ान में हुँ, मस्जिद ज़्यादा जाते हैं राइट? और तरावियों के लिए
तो वो यमनी खातून है एंड वेरी लविंग। उसकी बेटी मेरी स्टूडेंट रह चुकी हुई है मी एज अ यूथ मेंटर फॉर, तो 2 बेटियाँ उसकी। तो वो ना मुझे बहुत हाईली रिगार्ड करती हैं, रिस्पेक्ट करती हैं, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग। तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे कहा कि अस्सलाम वालेकुम मैडम, हाउ आर यू? तो मैंने कहा आई एम रियली ड्रेन्ड, आई हैड अ लॉन्ग डे, आई एम सो ओवरवेल्म्ड, I feel so angry, but I'm just trying to tell myself it's okay, it's okay. वो जो खातून थी ना उसका मुँह खुला का खुला रह गया। But you were being yourself. क्योंकि मैं अपने स्टेट ऑफ माइंड में थी ना, तो मैं पता है यहाँ पे क्या बताना चाह रही हूँ? मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि हाँ, बाज़ औक़ात आप एक्सपेक्ट नहीं करते, हमारा बड़ा एक बेसलाइन है। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्या ठीक है, मैं नहीं कहती कि अपने बक़िया हर जगह उखेड़ना शुरू कर दो या लेकिन ओके, नाउ आई कैन सी माय सेल्फ। अच्छा, हाँ, कंटिन्यूइंग। तो हुँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर कोई आपसे एकदम से यूँ, चूँकि वो ओवरवेल्म्ड स्टेट ऑफ माइंड में और आपको नहीं पता था और आपने पूछ लिया हुँ, उससे कि क्या हाल है, तो द मिनिमम यू कैन डू इज़ give them a hug. And if you're not a hugger, give them a smile. Or you can say, May Allah subhanahu wa ta'ala make things easy for you. It's lovely to एग्ज़ैक्टली, see you. Alhamdulillah. एग्ज़ैक्टली, है एग्ज़ैक्टली। ना? बट इस वाले तो एक्सपीरियंस में इरम आपने तो कुछ नेगेटिव नहीं किया ना? आप तो यू वर नहीं, I बीइंग was just योरसेल्फ। overwhelmed. Yeah, you were और just being मुझे yourself and sometimes हाँ, we are human being, we are overwhelmed और मुझे लगता है आपका पॉइंट ये है कि when someone is being overwhelmed or being herself तो आप उसको एक्नॉलेज करें। अगर आप नहीं भी मतलब उनकी पूरा catharsis सुन सकते like you said, give them good हाँ। gesture। हाँ, 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 give them a good gesture because not everybody is in that space कि मतलब कि आपको कहे कि अच्छा आओ बैठो, मुझे मैं तुम्हें हाँ, सुनता हूँ, और ज़रूरी नहीं, nobody owes us that, nobody owes us राइट। that, and we were not even friends. She was seeing me as a mentor for her kids, and you know एक हमारे ज़हन में होता है कि इसको तो सब कुछ आता है, ये तो मुझसे बेहतर मेरे बच्चों को समझती है, और वही बंदा आपको हुँ। आके कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी झंड हुई हुई है। ये तो एंड वी ऑल आर एट दैट फेज जहाँ पे लाइफ झंड हुई होती है। हाँ, जितनी मर्जी yeah, हमारी जो भी डेजिग्नेशंस हो, हम खुद भी मेंटोर हो, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग और हमारे किड्स yeah, के साथ हमारे चैलेंजेस आर देयर। सो that is true. बीइंग रियल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सेप्टिंग द किसी को की वल्नरेबिलिटी को इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Yeah. Okay, very good points. And next question is, how can we work together to strengthen family and community bonds? And why is the unity so important for raising resilient young kids? I think हमने काफी कुछ इसमें डिस्कस कर भी लिया है. Mhm. Maybe we can emphasize on the bond and resilience. Like bond again वही आ जाती है. बहुत सारे factors आ जाते हैं. What do you have to say about it? Again, it starts from home. It starts with the family. It starts with both the parents, their communication style and their parenting styles, the attachment style of the. अब ये मैं जो ये लफ्ज़ कह रही हूँ, मैं यहाँ पे हम दोनों, मैं और बुशरा इन चीज़ों को समझते हैं। हम इनको स्टडी कर हाँ, चुके हुए हैं। हाँ, मैंने आपको बताया कि हम दोनों आउटसाइड ऑफ दिस हमारी बहुत कन्वर्सेशंस होती हैं, एंड वी हाँ. बोथ आर ऑन द सेम पेज when it Hmm. comes to all of these things, right? So attachment style, communication style, और कम्युनिकेशन स्टाइल कि आप किस तरह से बात सुनते हैं, नॉट जस्ट Hmm. आप किस तरह से बात करते हैं, अथॉरिटेरियन और अथॉरिटेटिव हैं या परमिसिव हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन चीज़ों को आपने रिसर्च करना। Hmm. जब तक आप खुद से इन चीज़ों को, इन बातों को रिसर्च नहीं करोगे, आपको नहीं समझ आएगी। Hmm. और अक्सर हमारा गो टू होता है, आई एम ट्राइंग, Hmm. they are not trying, he is not trying, yes, she is not trying. And I've seen many psychologists say this, and one of them is Vanessa Leopold, yes, something like that. Her name is definitely Vanessa, Hmm. right? She's a doctor, she's Canadian, and उन्होंने एक जगह पे कहा था, और फिर उसके बाद मैंने गैबर मैटी को भी ये कहते हुए सुना कि not necessarily every child will get two parents who are on the Hmm. same page, who are emotionally and practically very safe and open for the child. The child needs one Hmm. adult that has the sensibility and the strength to be able to nurture the child. If the other is lacking, it's okay. If they both are on the same page, that's fantastic. But Yeah. one has to be more. One has to be more. और अगर हम देखें with the different phases of life में, शुरू के early years में, it's the mother who is giving a lot to Mhm. the child, and in the next, the teenage years, it's the dad. It's his leadership quality that the child is learning from. It's his
sensibility that the child is understanding कि अच्छा दुनिया में navigate किस तरह से करना है, etc. etc. So parents have their roles in different eras of a child's life. However, both the parents need to understand that they have to know what their attachment style is. They have to know how they show empathy to their child, what kind of language they're using with their child. इससे क्या होता है, इससे तो बॉन्ड स्ट्रांग होता है। कम्युनिटी बॉन्ड अगेन यही होता है कि आप जिस भी कम्युनिटी में मूव अराउंड कर रहे हो, सिर्फ नफ्सा नफ्सी मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा ना करो, दूसरे बच्चों अच्छा बिशाप ने कई दफा मुझे कहते हुए सुना होगा, मेरी कितनी सारी वीडियोस में हम कहते हैं कि ये हम क्यों कहते हैं कि आपके बच्चे ने मुझे सलाम नहीं किया, आप खुद क्यों नहीं सलाम करते हो? बच्चे को खुद सलाम करो, बच्चे को खुद पास बुलाओ, बच्चे को खुद पूछो आप कैसे हो, बच्चे की लिंगो जानो। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल माय हस्बैंड डज दिस एंड इट्स अ वेरी नाइस थिंग दैट ही डज, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे हैं, हमारे इनके कजिन्स हैं वगैरह वगैरह। अब जेन ज़ीर्स की एक लिंगो है, बच्चों के ज़हन में है कि मेरे अपने बेटे के ज़हन में है कि माँ को नहीं इतना कुछ खास आता, ठीक है ना? ठीक है, नहीं भी आता, लेकिन थैंक्स टू सोशल मीडिया वी आर वेरी मच अवेयर विद द जेन ज़ी लिंगो। तो Amir would go ahead and Amir would talk to the cousins and the children with the Gen Z lingo, and वो हँस के उलट-पुलट हो जाते हैं उनको कि oh my God, stop. लेकिन it is so much fun. It is bonding with them. It is connecting with them, right? तो Yeah. तो this is what the adults need to do. चाहे वो हमारे बच्चे हैं, चाहे वो हमारे बहन-भाइयों के बच्चे हैं, चाहे वो बस हमारी कम्युनिटी के बच्चे हैं, bond with them with nice words and activities and make them comfortable, make them feel easy. मुझे याद है एक दफ़ा ना कोई मस्जिद में कोई इवेंट था और बच्चा था, सब बच्चों को एक-एक पिज़्ज़ा का स्लाइस मिला था। अच्छा। और एक बच्ची थी, मैंने ना पता नहीं क्यों मैंने उसको दूसरे पिज़्ज़े का स्लाइस दे दिया। मैंने कहा लो। अच्छा। उसने मुझे कहा ओह माय गॉड! यू आर सच अ काइंड पर्सन, यू गेव मी अ सेकंड स्लाइस। मुझे हालाँकि आई वाज़ लाइक कौन से मैं अपने घर से लेकर आई हूँ पुत्र ये सबके खाने के लिए, तुम खा लो कोई मसला नहीं है। लेकिन क्यूट। वो जो उस बच्चे ने जैसे रिएक्ट किया और उस बात में इतने साल बाद भी वो बच्चा जब भी मुझसे मिलती वो बच्ची जब भी मुझसे मिलती है और जिस तरह से मिलती है, वो सिर्फ़ वो एक हरकत, वो एक चीज़, एक इवेंट था और कोई वजह नहीं थी उसे सेकंड स्लाइस देने की। इट वाज़ जस्ट पता नहीं क्यों। तो द चिल्ड्रन रिमेंबर योर काइंडनेस एंड चिल्ड्रन रिस्पेक्ट यू फॉर योर काइंडनेस एंड रेज़िलियंस। अगेन आपने देख लिया कि माशाल्लाह तबारक हमारे यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स, हमारे जो यंग बच्चे जिन्होंने पैलेस्टीनियन कॉज़ सारा देखा है, दे हैव शोन रेज़िलियंस। फॉर एग्जांपल मेरी बेटी जो अच्छा वी आर नॉट स्टारबक्स पीपल, वी डिड नॉट ग्रो अप ऑन स्टारबक्स, आवर चिल्ड्रन डिड नॉट ग्रो अप ऑन स्टारबक्स, बट यू नो कभी-कभी लग्जूरियस फील करने के लिए हम लोग ले लिया करते थे वहाँ से चीज़ें। सो रुमैसा वाज़ लाइक शी वाज़ सेइंग आपको पता है मम्मा इट्स बीन अ ईयर हमने उसकी शक्ल भी नहीं देखी उस जगह की। आई वाज़ लाइक आई एम सो प्राउड ऑफ यू। कहती लेकिन मम्मा पता है क्यों ईज़ी था? मैंने कहा क्यों ईज़ी था? हाँ। कहती हमें आदत ही नहीं थी। अगर होता ना कि हम रोज़ पी रहे हैं और रोज़ करें तो शायद मम्मा मुश्किल होता, लेकिन हमें कोई इतनी ख़ास आदत नहीं थी। हालाँकि शी वाज़ गिविंग हरसेल्फ दिस स्पेस कि यू नो मैंने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया है, लेकिन हाँ। आई स्टिल सॉ कि इट वाज़ देयर रेज़िलियंस। फॉर एग्जांपल उस दिन पता नहीं क्या फ्रेंच फ्राइज़ चाहिए थे, कुछ चाहिए था, मैंने कहा अच्छा बर्गर किंग से ले लेते हैं। शी वाज़ लाइक नो मुझे चाहिए ही नहीं है, नहीं हाँ। लूँगी। इट्स कंप्लीटली ओके। कुछ नहीं हो या जाएगा मुझे। या तो द चिल्ड्रन आर अवेयर एंड रेज़िलियंस इसी बात से बढ़ती है कि जहाँ पे उनका ग्रैटिट्यूड माइंडसेट रेज़िलियंस आती कहाँ से? ग्रैटिट्यूड माइंडसेट होना चाहिए, शुक्र का माइंडसेट होना चाहिए। अगर वो पेरेंट्स को भी देखते हैं कि पेरेंट्स भी छोटी-छोटी मुश्किल में भी शुक्र करते हैं, तो उनको ये समझ आ जाती है कि शुक्र इज़ वे मच बिगर देन कंप्लेनिंग एंड देन रेज़िलियंस बिकम्स ईज़ियर टू Yeah, अडॉप्ट। and we are talking about the resilience for the interaction within community कि आपने डिस्करेज नहीं होना नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से। मतलब हाँ, ये जो रेजिलियंस है ना, मैं हाँ। उस रेजिलियंस की बात कर रही हूँ कि जो आपको कम्युनिटी में इन टच रहने के लिए ज़रूरी होती है। बाज़ दफ़ा बच्चे को कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है, आई एम नॉट सेइंग अबाउट हार्मफुल थिंग्स, लाइक बहुत बुरा कोई एक्सपीरियंस हो गया तो आप बच्चे को नहीं कीप ऑन गोइंग। तो वो एक हदीस भी है ना कि तुम में से सबसे अच्छा वो है जिसको नेगेटिव एक्सपीरियंस के बावजूद मफ़हूम है, वो लोगों से मिलता रहता है, अल्लाह ताला को वो शख्स बहुत अज़ीज़ है। तो हाँ, बच्चों को भी उस तरह की रेज़िलियंस के वन नेगेटिव एक्सपीरियंस डज़ नॉट मीन कि वो बच्चा बिल्कुल ही बुरा है, क्योंकि इस तरह तो हम पहले ही आइसोलेशन में रह रहे हैं। अगर बच्चे बिल्कुल पिकी होते जाएँगे, बर्दाश्त का मादा इन अदर वर्ड्स, यहाँ हाँ, पे हाँ, हाँ। रेज़िलियंस का वो मतलब है, हाँ, बॉन्ड। हाँ। एंड जो मुझे समझ आई है, अगर मैं आपकी कन्वर्सेशन को समराइज़ करूँ, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम। किसी एक It पेरेंट का starts from इतना home. वाइज़ Yeah. होना काफ़ी हाँ, है कि वो ज़ाहिर है पेरेंटिंग में ही आ जाता है बॉन्ड टीच करना विद इन कम्युनिटी। सबसे पहले इट स्टार्ट्स विद फैमिली बॉन्ड एंड देन यू टीच देम द कम्युनिटी बॉन्ड। हाँ, एंड एब्सोल्युटली। और या बच्चों की छोटे बच्चों की स्पेशली पता है अच्छी बात ये है, उनको घंटा या फ़र्क नहीं पड़ता। कोई आंटी चीख के चली गई है। भूल जाते हैं।
Yeah, I know that, but yeah, it's Some very some important are to sensitive. appreciate. Some are sensitive and they remember until they become grandmothers and grandfathers कि हाँ किसी ने मुझे Yeah. कहा था. However, I must tell you this, that it totally depends on how the parent is repeating the incident in front of the child and in front of other adults. कि if the parent makes a huge deal out of it, the child is Hmm. going to मतलब कि जिसको कहते हैं ना मज़ीद सिमट जाना है, उसको हाँ. मज़ीद तकलीफ होती है, उसको लगता है कि ओह! मेरे साथ वाक़ई में कुछ बुरा हुआ था। और Hmm. अगर और मैं ये नहीं कहती और मैं बिल्कुल नहीं इस बात को डिसरिगार्ड करती कि अगर कोई अनजाना बंदा है और वो मस्जिद में चलते-चलते उसने आपको पकड़ के तो कहा, "हे व्हाट आर यू डूइंग हियर? गो फ्रॉम बैक देयर" तो बच्चे को बुरा नहीं लगेगा, किसी भी इंसान को बुरा लगेगा, ठीक है? किसी भी इंसान को बुरा लगेगा। उसको शायद पता ही नहीं कि बच्चे को शायद बाथरूम का रास्ता नहीं पता था, इस वज़ह से वो यहाँ पर है। बच्चे को शायद कोई एलर्जी हो गई है, इस वज़ह से यहाँ पर है, अपने पेरेंट को ढूँढ रहा है, इस वज़ह से यहाँ पर है। The other adult that's shouting at the kid is probably not thinking. The kid is already going through something और फिर उसके ऊपर से on top of it an adult is being disrespectful to the child. Now, Right. is the child going to be affected? 100% the child is going to be affected. But Right. does the child have the innate resilience to get over it? Yes, once they feel bad, then they go to their mom या dad या अपने कमरे में बंद हो जाते हैं, कुछ अजीब सा बिहेव करते हैं, मदर या फादर अगर उनका इस तरह का बॉन्ड है कि जहाँ पे वो बच्चे के बॉडी के क्यूज को, इमोशन के क्यूज को समझ सकते हैं, तो कहते हैं यार आई एम अ सेफ स्पेस फॉर यू, मुझसे बात करो, let me know what's happening with you. And Yeah. eventually the child does say, and then you acknowledge the child, validate the child, you ask the child, do you want me to go and address this with other people or not, or etc etc. Then फिर and बस यहीं तक बच्चा ठीक हो बिल्कुल। जाता है. मैं इसी रेज़िलियंस की बात कर रही हूँ। नाउ यू आर हाँ, क्रिएटिंग द रेज़िलियंस बिकॉज़ यू आर क्रिएटिंग अ सेफ स्पेस फॉर द किड कि अगर उसको हाँ, कम्युनिटी के किसी मेंबर से नेगेटिव एक्सपीरियंस हो गया, इट डज़ हाँ, नॉट मीन कि वो अपने ज़हन में बिठा ले कि यार देसी नहीं अच्छे होते, मुझे तो गोरे हाँ, फ्रेंड्स ही अच्छे हैं सिर्फ, राइट? हाँ, तो कम्युनिटी हाँ. का बॉन्ड तभी स्ट्रॉन्ग होगा जब आप बच्चे के इमोशंस को साथ-साथ एड्रेस करेंगे। आई नो इट्स चैलेंजिंग बट रेज़िलियंस अगेन स्टार्ट्स फ्रॉम होम। मेरे केस में तो मैं खुद अपनी बताती हूँ, अगर किसी ने मेरे बच्चे को कुछ कहा और मुझे पता चला तो मैं तो खुद ही उस बंदे के पीछे पड़ जाती हूँ। फिर मेरे बच्चे कहते हैं कि हाँ, मामा हमने आपको इसलिए तो नहीं बताया था। आप इसको डिस्करेज करिए या एनकरेज करिए। मुझे नहीं पता लेकिन मैं हाँ, सिर्फ़ बता रही हूँ कि हाँ, यू शुड इट्स एड्रेस इट बोथ डिफिकल्ट टू होल्ड इट बिकॉज़ या हाउ डेयर दे हर्ट माय चाइल्ड। हुँ। इमीडिएट रिएक्शन ये होता है कि दे हर्ट माय चाइल्ड। या मे बी एड्रेस करना इम्पोर्टेंट है ताकि कोई और बच्चा ना हर्ट हो उस तरह से हाँ, मे बी हाँ, एंड इट्स नॉट अबाउट एन अडल्टिंग हर्टिंग आवर किड्स हाँ। इट्स अबाउट अदर किड्स आल्सो इफेक्टिंग देसी बच्चे हाँ, आपस हाँ, में जो बहुत लड़ते हैं बुली होते हैं बच्चे एक-दूसरे को इतना बुली करते हैं, अस्तगफुरुल्लाह। हाँ पहली कभी बुलिंग हो देखना हो ना कि कैसा तो प्री-के की क्लास में जाके प्लीज़ वॉलंटियर करके दिखाओ, प्री-के में बुलिंग नज़र आ जाएगी। द ओनली पॉइंट इज कि पहले ही हम इतने थोड़े लोग हैं यहाँ पे गिने हाँ, चुने तो हाँ, अगर हाँ। हमारी आपस में इंटरेक्शंस किसी भी वजह से बच्चों का कम हो जाएगा तो इट वुड इफेक्ट देयर सोशल स्किल्स एंड एवरीथिंग और दूसरी बात ये है कि एक मोहल्ले में रहने वाले जो बच्चे होते हैं, ठीक है? उनके पेरेंट्स का लाइक यू सेड डिपेंड करता है कि आपस में बनती है कि नहीं बनती। लेकिन अगर हाँ, बनती है तो दे शुड क्रिएट सेफ स्पेस लाइक हाँ। बाहर निकलें, बाइकिंग करें, हाँ, मैं दैट्स तुम्हें काइंड ऑफ बताऊँ एक एनवायरनमेंट वी नीड फॉर किड्स। Definitely, and people do that because I know of one such family जो यहाँ पे डेलावेयर में थी, हम वो हमारे साथ होम स्कूलर्स थे और अब वो शिकागो में रहते हैं। तो मैंने ना ऐसे एक दिन कुछ कुछ हफ्ते पहले ना मैंने ऐसे ही फ़ोन किया तो उसने फ़ोन उठाया, सारा ने फ़ोन उठाया तो मैंने कहा तुम गाड़ी में क्यों हो? तो तुम ड्राइव कर रही हो, तुमने फ़ोन उठा लिया? कहती नहीं, नहीं, कहती ये एक मोहल्ला है, माशाल्लाह बड़ा फ़ेमस मोहल्ला हो गया क्योंकि हर घर में बच्चियाँ और सारी बच्चियाँ एक ही एज ग्रुप की हैं। तो सो यहाँ पे गुड। 10-11 घर हैं। अब हम सारा दिन हम सारी माएँ और बाप जो है ना गाड़ियों में अपने बच्चे को ले-लेके घूमते हैं। किसी की तरफ पिकअप का टाइम है, किसी की तरफ ड्रॉप का टाइम है, किसी का तो कहती है सो गुड। मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ हाँ, कि इनकी प्ले डेट खत्म हो तो ये घर आएँ। तो awesome. या पीपल डू दैट। ना नो आई लव इट और ये इस अंडरस्टैंडिंग की हमें ज़रूरत है। ये नहीं कि ओ यार वो यहाँ पे बहुत देसी है ये वाला एरिया ओह माय गॉड वो वाली मेंटालिटी नहीं दे आर देसी लाइक अस एंड वी शुड ओन देयर किड्स नॉट जस्ट ओन आवर ओन किड्स वी शुड ओन देयर किड्स एज like our own kids एज़ वेल। and या I've seen that in other communities a lot like our हाँ, Indian fellows I've seen them this thing a lot and we should learn this thing from them या in New Jersey I've observed this thing. Okay, एंड I can speak on this topic like resilience वाला भी और इसमें बच्चों के challenges हैं a lot, but let's move to the next point. How can we encourage role modeling mentorship within our communities and what impact can positive mentors have on Muslim youth? मेरे मेरे सामने पास ना मस्जिद आ रही है लेकिन आप मुझे बताएं there are other aspects to it? हाँ, there are many organizations, non-Muslim does not matter. Okay. So one thing Mhm. जहाँ पे हम मुस्लिम्स
एटलीस्ट क्योंकि मेरा सिर्फ उन्हीं से पाला पड़ा हुआ, मेरा नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से पाला नहीं पड़ा। सो मैं आपको ये भी मैं बड़ा ओपनली ये भी कहूँगी कि चूँकि मेरा नॉन मुस्लिम से बहुत ज़्यादा पाला नहीं है, तो मेरा जो वर्ल्ड व्यू लेंस है वो थोड़ा-सा वन साइडेड ही है। सो डू फॉरगिव मी फॉर दैट, ठीक है? लेकिन anywhere where I have seen youth coming up, and I've worked with Jewish community youth, I've worked with Christian community youth, I've worked with Hindu community youth as well, because masjid ke jo interfaith programs hote the jab main mentor youth mentor thi, so we would invite them and we would go to their places as well, right? And we would organize meals together and we would take them to ye jo hote hain फूड बैंक्स होते हैं या फिर जो उनसे सेंटर्स होते हैं जहाँ पे दूसरे लोग मतलब सिर्फ आके रात गुजार के वापस जा सकते हैं, राइट? द होमलेस कम्युनिटी, राइट? द होमलेस हाँ। कम्युनिटी सेंटर्स और चर्चेस है, एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर चर्चेस। एंड एज अ होम स्कूलर मॉम आई नो दिस कि मैं अपने बच्चों को लेके जाती थी, स्पेसिफिक चर्चेस थे जो जिनको ना वहाँ पे लॉन्ड्री अरेंजमेंट के लिए वॉलंटियर्स चाहिए होते थे, फूड पैंट्री के लिए पैंट्री अरेंज करने के लिए वॉलंटियर्स चाहिए होते थे, तो मैं बच्चों को लेके जाती थी, करते थे ये काम। ये नहीं कि एक्सपोजर बिल्कुल नहीं है, लेकिन एज अ लीडर आई वर्क इन माई मुस्लिम कम्युनिटी, और मैंने एक बात पल्ले से बांध ली थी उस वक्त जो मुझे समझ आई थी कि जब हम थानेदार बन जाते हैं ना, तो थानेदार रिटायर भी होता है। कब्र तक आप थानेदार नहीं रह सकते हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको अपना रोल समझने की ज़रूरत है कि मैं यहाँ हाँ। पे हमेशा के लिए नहीं हूँ, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी चीज़ में प्रोग्रेस और ग्रोथ तभी आती है जब आप दूसरों को आगे आने देते हो। बच्चे मैंने देखा है, बच्चे आर स्मार्ट एंड दे आर एंथुसियास्टिक एंड दे डोंट हैव, तो उनके साथ ना ज़िंदगी ने इतने उनको अभी चपेड़े नहीं मारी होती कि वो ना डरे हुए हों। हम बड़े तो बहुत डरे हुए होते हैं ना, तो हम पता है क्या करते हैं? हम उस लेंस से देख रहे होते हैं, इसको ये बुरा लग जाएगा, उसको ये बुरा लग जाएगा, इनको ये ऑब्जेक्शन हो जाएगा, उनको वो ऑब्जेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्लेटफ़ॉर्म देते हो ना यूथ को, दे आर नॉट थिंकिंग ऑफ ऑल द ड्रॉबैक्स, दे आर जस्ट थिंकिंग ऑफ लेट्स डू दिस एंड लेट्स डू दिस। आप उनको गाइड कर सकते हो कि पैरामीटर्स उनको दे सकते हो, बट व्हेन दे कम अप विद समथिंग, उस चीज़ की जो एनर्जी होती है ना बुशरा, वो अलग ही होती है। Yeah, that is our sadqa jariya, when we let them do things and we have faith in them. That is how you mentor the youth. You don't mentor the youth कि बस मैं हाँ बोलूँगी तो होगा, मैं ना बोलूँगी तो नहीं होगा। बिल्कुल। और मैं आपकी बात से मुझे ये चीज़ समझ आई कि ज़रूरी नहीं कि डेडिकेटेड मेंटोर और उसके ऊपर टैग लगा हो दी मेंटोर, राइट? आपके अंदर कुछ भी पॉजिटिव एबिलिटी है ना, ट्रांसफर इट। जैसे आपने वो चर्च की जो एग्जांपल दी, यू हैव टू टीच देम डिफरेंट स्किल्स, इट डजंट हैव टू बी ओनली इस्लामिक रिलीजियस टनल विजन वाली एक सोच। यू हैव टू टीच देम पॉजिटिविटी जहां से भी मिल रही है, जहां से भी मिल रही है। हमारा दीन हमें कहता है कि जहां से खैर मिले ले लो, खैर जहां पे दे सको दो। हमारे सामने हिस्टोरिकली एग्जांपल है, इंडोनेशिया मलेशिया को कभी भी तलवार से फतह नहीं किया गया था, आपकी कैरेक्टर से वो फतह हुआ था, तो आपकी गुड कैरेक्टर से। तो हम अगर अपने आप को इतना ओपन रखेंगे नहीं और ये अपॉर्चुनिटीज अवेल नहीं करेंगे, अमेरिका में होने का मकसद क्या है? क्या फायदा क्या है हमें अगर हम अपने दीन को इस तरह से लेके नहीं चल सकते? तो राइट, आवर किड्स शुड कोट us या अदर आंटीज और अंकल्स एन एग्जांपल कि मुझे इनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है, आई वांट टू बी लाइक देम और हिम, वी हैव टू बी रोल मॉडल, नॉट थ्रू योर वर्ड्स ओनली। वेरी गुड पॉइंट्स। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी एड्रेस कर दिया, लेकिन आई जस्ट वांट यू टू शेड मोर लाइट ऑन दिस। हाउ डू यू डील विद सर्टेन इंडिविजुअल्स, बीनिश ने पूछा ये, who due to sense of entitlement feel that they should criticize and admonish, like chacha mamu pupo types, the argumentative ones. How मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देखो आपका बच्चा है ना, तो हमारा सबसे पहला राइट है कि हम उस बच्चे को डिफेंड करें। मैं किस तरह से एग्जांपल दूँ? मैं अपनी अगर एग्जांपल दूँ तो मैं देखूँ कि मेरे इर्द गिर्द कितने लोगों ने मेरे बच्चों को डांटा होगा या उनको कहा होगा कि तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया। किसी ने नहीं कहा। मैंने क्या किया था? क्या मैं उन सबके साथ अच्छी नहीं हूँ? नहीं हूँ अच्छी, लेकिन आई मेड इट वेरी लाउड एंड वेरी क्लियर, एंड सिर्फ मैंने नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने भी, कि वी आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट आवर चिल्ड्रन, we are very protective about our children, we respect your children and we give them love and appreciation, and this is what we expect from you for our children. पहली चीज तो ये। सबसे ज्यादा आप अपने बच्चे को vulnerable करते कब हो? जब आप अपना अच्छा इमेज मेंटेन रखने के लिए BS लेते हो।
और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और औरतों को ये बात बहुत देर से समझ में आती है। जब आपको अच्छाई का मेडल, तमगा, निशाने हैदर गले में तोक लटका के फिरने का हर वक़्त शौक हो, तो आप अपने बच्चे को डिफेंड नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते हो। That You is have to so be true, and I can personally relate to it. हाँ। We have some connection lag. I don't know how I'm appearing right now. अच्छी लग रही हैं आप, हर I हालत में think आप अच्छी प्यारी it लगती is हैं। stuck. It is stuck right now. I don't know if we are going live properly. I think there is some connection problem. हाँ, But है जैसे regardless, इंशाल्लाह से। you can hear me properly, right? The Yes, I can transmission hear is you. I can hear you. Yes. okay. Okay, it's back, I guess. Okay. Yeah, that's very good answer. Thank you, Iram. And we will move to our next point, and that is, I think, how does it mean to create safe space for the youth within our communities, and what impact can positive mentors have Muslim youth? I think we already discussed that. It is Yeah, kind yes, of we did. covered in both मुझे points. या बुशा मैं उस वाली जो मैं बात कर रही थी ना कि हम अपने बच्चों को दूसरों से, तो हमें ना खुद वो लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी। इट गेट्स अगली बिफोर इट गेट्स गुड। मैं Yeah. ये नहीं कह रही कि हम जानबूझ के अपने बच्चों को जो है वो किसी के आगे फेंक देते हैं या फिर हमें बदतमीज़ और मुँहफट होने की ज़रूरत है। लेकिन अगर एक बाउंड्री कभी क्रिएट नहीं की है ना, तो उसको करने की हिम्मत फिर पेरेंट की ज़िम्मेदारी है, बच्चे की नहीं है। क्योंकि मैं एक बात बता देती हूँ, बच्चे एक सर्टेन एज तक ना ज़ुबान काबू में रखते हैं। फिर जब उनको Hmm. ये लगे ना कि मेरा पेरेंट मुझे डिफेंड नहीं कर सकता या वीक है, तो Hmm. फिर वो खुद अपने आप को डिफेंड करने लगते हैं और वो जो कड़वाहट है, वो उनका लोगों के बारे में वर्ल्ड व्यू, दिल जो है वो तंग कर देती है। सो Hmm. अगेन उनकी अपने कैरेक्टर डेवलपमेंट में भी फिर लैकनेस आनी शुरू हो जाती है बिकॉज़ इफ अ चाइल्ड स्टार्ट्स Hmm. फीलिंग दैट आई हैव टू फेंड फॉर माय सेल्फ, माय पेरेंट इज़ नॉट गोइंग टू फेंड फॉर मी बिकॉज़ जी हमने अपनी रिश्तेदारी को बहुत अच्छे से निभाना है। तो द थिंग इज़ हर बंदा हर वक़्त लड़ाई नहीं कर सकता, मैं इस बात को प्रैक्टिकली समझती हूँ। फिर आप खामोशी इख्तियार करो और डिस्टेंस इख्तियार करो, बाउंड्री Hmm. इख्तियार करो। दैट इज़ अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। Okay, okay. I don't know कोई फीडबैक दे क्योंकि मेरे पास तो ट्रांसमिशन थोड़ी स्टक आ रही है. If मुझे somebody भी is ऐसे ही नज़र आ रहा है। experiencing any lag, you guys can let us know and we can re-log in. आपको सही नज़र आ रहा है? Then I think it's on my end only. So, but we will continue the conversation. If you guys are experiencing any lag, let me know. I think अगला क्वेश्चन जो है वो है about emotional intelligence. Why fostering emotional intelligence is important for our youth, and what are some effective ways to help young people to develop these skills? ठीक है। So, what to do to develop emotional intelligence? Yeah, why it's important in first place in developing सबसे community पहले तो bond. क्योंकि वो सबसे पहले तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ। ही वाज़ सो इमोशनली इंटेलिजेंट कि वो हर बंदे को एक Yeah. तरह से नहीं रिसीव करते थे। अगर कोई बद्दू आया है, तो उसको कान Hmm. झड़क के उन्होंने ये कहा, तुम जाहिल हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता क्यों नहीं है। अगर कोई सहाबी पास आए हैं जो इतने अरसे से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, तो उन्हें ये नहीं कहा कि यार तुम्हें समझ ही क्यों नहीं आती है। डायरेक्टली कभी भी किसी को शर्मिंदा करके एड्रेस नहीं किया। दैट वाज़ हिज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। हम इतना सुन्नह की बात करते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा की बात करते हैं, तो हम ये चीज़ अपनाते क्यों नहीं हैं? क्यों नहीं अपनाते हैं हम ये? हमें Hmm. इस इमोशनल इंटेलिजेंस को अपनाने की ज़रूरत है। दिस इज़ द इमोशनल इंटेलिजेंस जिसकी हमें ज़रूरत है। उस दिन बड़ी एक अच्छी सीरा की स्टोरी मैं सुन रही थी और उसमें ये था कि वाज़ इट यार बुशरा वो कौन से सहाबी थे जिनसे सबसे ज़्यादा हदीस रिवायत हैं? उनका नाम मुझे भूल गया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है? Uh, So Abu Hurairah radiallahu anhu, he was like he hadn't eaten food for so many days and he was really hungry and what he did was वो पहले ना अबू बकर के पास गए ऐसी कोई बात करने के लिए ना, तो अबू बकर ने कहा हाँ, ये ऐसी है, हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा फिर अब मज़ीद वो क्या बात करते हैं? फिर वो उमर के पास चले गए, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास कि वही बात, वही क्वेश्चन लेके। उन्होंने कहा हाँ, क्या मसला है? हाँ, हाँ, ये ठीक है, ठीक है। फिर ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और वो क्वेश्चन लेके गए एंड हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या कहा उनको? भूख लगी हुई है, चलो आओ मेरे साथ आओ। hmm. Again, Wow. he Subhanallah. knew the Sahabas, right? He knew Subhanallah.
he knew the sahabas, उनकी मेंटालिटी, उनके मिजाज, उनके बात करने का तरीका, he was aware of it. मैंने एक एग्जांपल क्यों दी है, इसलिए दिए क्योंकि हमारे बच्चों से हम ही सबसे ज़्यादा अवेयर हो सकते हैं, और अगर हमारा अपनी ज़ात के साथ डिस्कनेक्ट है, हम अपनी ही इमोशंस के साथ अवेयर नहीं होंगे, खुद ही इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होंगे, तो हम अपने बच्चों के साथ किस तरह से इमोशनली इंटेलिजेंटली पेश आ सकते हैं? बिकॉज यू मेक एवरीथिंग अबाउट यू. The problem is we make everything about us. It's not about the child. The minute a parent starts to give space कि this is not about me and this is about my child, और मुझे उसके बारे में समझने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है, उसको जानने की ज़रूरत है, उसके लिए मुझे सेफ स्पेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, मुझे गुस्सा भी आ रहा है और मुझे गुस्सा जायज़ भी है, लेकिन I have to hear their part of the story, and in the end you can disagree with them. You can definitely disagree with them. मतलब कोई कह रहा है कि मैं जी अब शराब पीना चाहता हूँ क्योंकि मेरे सारे दोस्त शराब पी रहे हैं, तो आप उनको शराब तो नहीं ना पीने दोगे, लेकिन क्यों शराब पीना चाहते हो, उससे महसूस क्या करोगे, क्या चीज़ अचीव करना चाहते हो, तुम्हारी अकम्पलिशमेंट क्या होगी, आपको पता चल जाएगा कि भाई मुझे अपने बच्चे को इमरजेंसी तौर पे इस माहौल से निकालना है, फिर आप उस डायरेक्शन में जाओगे, बजाय इसके कि उसको कमरे में बंद कर दो, ताला लगा दो, फिर भी आपने सपोर्ट के उसको स्कूल भेज देना, तो क्या वो मसला हल हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल. नो, that's very important. मेरे ख्याल में इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ वेरी बेसिक थिंग इन एवरी सिचुएशन, इन एवरी रिलेशनशिप. सो कम्युनिटी बॉन्डिंग के लिए भी और इंटरेक्शंस के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है. सो या आई एग्री. Okay, the next point which I had is, and I'm rushing towards it because already I can't believe 45 minutes गुजर चुके हैं. I have a lot to ask. So बस मेरे ख्याल में हम काफ़ी कवर कर चुके हैं ये वाला पॉइंट भी, लेकिन I would still ask, what are some of the challenges that youth faces in balancing culture and faith identity, and how can families and communities can help navigate these complexities? I'm trying that ये show हो मेरी screen पे, but I hope you heard the हुआ question. था, हाँ, हो गया था, अब हो गया. चला गया. Okay. अच्छा, तो अब चला गया, एटलीस्ट मुझे तो ऐसे ही It's लग रहा है about सब चला गया. balancing culture and faith identities actually. The question ठीक is है, about तो that. तो सबसे पहली जो बात है ना कि आइडेंटिटी क्राइसिस होगा, उसके लेवल्स हैं कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा या थोड़ा होगा, लेकिन होगा ज़रूर, ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो. अब हम सिर्फ एक अपने मुस्लिम कल्चर को देख रहे हैं, आप मैक्सिकन्स को देख लो, ठीक है? मैक्सिकन्स बेसिकली कैथोलिक हैं, लेकिन यहाँ पर अमेरिका में आके कैथोलिज्म जो है वो इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होता है. डिफरेंट इनके भी डिफरेंट सेक्ट्स हैं, ठीक है, क्रिश्चियनिटी के. बच्चे जो हैं डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं. अगेन उनका भी वही मसला है, उनके खाने घर पे अलग पकते हैं, लेकिन बाहर आके बच्चे अलग खाते हैं. हमारा हलाल हराम का भी डिफरेंस है, हमारे बच्चे भी अलग खाने खाते हैं, अलग खानों के. दे अंडरस्टैंड दिस. और फिर जब हम ये कहते हैं कि अमेरिका एक ऐसी जगह है जहाँ पे डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ और कल्चर्स आके मिक्स होते हैं, तो इससे ज़्यादा बड़ी ट्रूथ की बात नहीं है कि वाक़ई में मिक्स होते हैं. अब हम इस एरा में हैं जहाँ पे हम अवेयर हैं कि हमें सिर्फ गोरे को अडॉप्ट नहीं करना, गोरे को भी पीछे हट के समझने की ज़रूरत है कि भाई आप भी हमसे कुछ सीख सकते हो, और अगर आपका सीखने का दिल नहीं है तो साइड पे पासे हो जाओ, हम अपने काम करने के ठीक है? तो द थिंग इज़ कि our children are always going to feel, am I a part of this? Am I not a part of this? Do I want to indulge in this? Do I not want to indulge in this? This is the reality of an American child whose parents are ethnically not Goras. Right. ये आधी तो बात हुई है, और बाकी का बात मुझे भूल गई है, वो मुझे हेल्प कर दो. बस हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि ऑन टॉप ऑफ कम्युनिटी इंटरेक्शन जो चैलेंज वो ऑलरेडी फेस कर रहे होते हैं वो आइडेंटिटी वर्सेस कल्चर का हो रहा होता है, राइट? उसमें मुस्लिम हम जो खुद देसी हैं, हम बच्चों को कैसे हेल्प कर सकते हैं कि वो इस चीज को ओवरकम कर लें? Again, the people who are involved with the children, वो कहीं पे भी हो सकता है, वो आपका यूथ ये YMCA भी हो सकता है, ठीक है? वहाँ पे भी जाके अगर आप वॉलंटियर कर रहे हो या कहीं पे भी जाके करो, आपको ना यूथ की नब्ज़ पकड़ने की ज़रूरत है. जैसे मैंने पहले लिंगों की बात की, वैसे उनके ना कुछ उनके हर यूथ के टाइम के कुछ होते हैं मसाइल या उनकी सोच होती है, राइट? आजकल की यूथ किस चीज़ पे फ़ोकस्ड है? जी, मेंटल हेल्थ पे फ़ोकस्ड है, लेबल्स पे फ़ोकस्ड है, सेलिब्रिटी स्टेटस पे फ़ोकस्ड है, हाउ टू कट कॉर्नर्स टू मेक मनी फास्ट फ़ोकस्ड है, लेकिन ऑथेंटिसिटी पे भी फ़ोकस्ड है.
और मसाइल के हल पे भी फोकस्ड है, ड्रग इन्फ्लुएंस पे भी फोकस्ड है, मैरिंग आउटसाइड ऑफ मुस्लिम्स भी फोकस्ड है। यू अंडरस्टैंड? फिर ये या टॉपिक्स बहुत बहादुरी के साथ और समझदारी के साथ ओपन स्पेस, मस्जिद कम्युनिटी की बात करूँगी क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मेरा ज़्यादा जो इंटरेक्शन है उस कम्युनिटी से है, तो वो जगह प्रोवाइड करें, बच्चे को पता चले कि हम एज मुस्लिम्स हम इन चीज़ों को समझते हैं, हमारे बड़े भी देख रहे हैं और वो इन चीज़ों को एड्रेस करना चाह रहे हैं ताकि हमारी और इनकी ज़िंदगी आसान हो सके। That is the first and foremost step that you need to do. You cannot say, "Oh, we are Muslims and this is not a problem in our homes." No, everything is a problem in our homes. We are humans. Before Muslims, we are एग्जैक्टली। humans. ओके, इफ आई पुट इट इनटू सिंपल वर्ड्स, अगर आप किसी बच्चे के बारे में सुन रहे हैं, किसी तरह उड़ती-उड़ती आप तक पहुँच गई है कि वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गया है, डोंट जज दैट किड, डोंट जज दैट पेरेंट। आप देखें कि आप हेल्प कैसे कर सकते हैं। कोशिश करें कि हाँ, पहले तो अपनी how बात को फैलाएँ ना, दूसरी बात ये कि उस तरह कोशिश की करें। वर्कशॉप्स लेकर आओ, अपनी कम्युनिटी में वर्कशॉप्स लेकर आओ, उस बच्चे और उस बच्चे के फ्रेंड्स जो हैं उनको इनवाइट करें। एंड आई किड यू नॉट, चिल्ड्रन आर सो अट्रैक्टेड टू पिज़्ज़ा पार्टीज़ एंड जंक फूड पार्टीज़। जस्ट डू दैट। Yeah, like provide a supportive environment because it could be your kid as well. God forbid, अब हर वक्त तो साई की तरह सवार मतलब बच्चों के सर पे सवार नहीं हो नहीं, सकते ना, तो you नहीं, are leaving बिल्कुल। your kid alone as well. God forbid, it can be just one, your kid is one slip away also. अल्लाह सब बच्चों को अपनी बिल्कुल। हिफाजत में रखे, but आमीन सुन। it can be your kid as well. वो कोई भी चैलेंज जिससे कम्युनिटी का बच्चा गुजर रहा है, उससे अपना बच्चा समझे, उसे हाँ, उस पेरेंट को और उस बच्चे को आपकी एम्पैथी की, आपकी सिम्पैथी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दैट्स ट्रू, राइट? दैट्स वेरी ट्रू। बहुत प्यारी बात की आपने मुशर्रा, बिल्कुल सही कहा आपने। या आई थिंक अगले जो हमारे क्वेश्चन है ना, वो हमने ऑलरेडी कर दिए हैं कि उसमें यही था कि हम कैसे पर्सनल जो ग्रोथ है बच्चों की, जो उनके यूनिक इंटरेस्ट हैं, उनको हम कैसे वो उस चीज़ को फोस्टर कर सकें, या हम कैसा कैसा एनवायरनमेंट कैसे ऐसा एनवायरनमेंट हम दे सकते हैं बच्चों को। आई थिंक उसमें ये चीज़ आ जाती है, सारी बातें आ जाती हैं, जो मेंटोरशिप की बिल्कुल। या कम्युनिटी सपोर्ट की बात होगी, राइट? उसमें फिर उनके जो यूनिक यस, इंटरेस्ट है वो खुल के सामने आते हैं। They can बिल्कुल flourish like सही। any kid, right? Who is यस, enjoying it, एब्सोल्युटली, right. एब्सोल्युटली। So yeah, so any conclusive statement, like I would like to wind up this because we are already यस, 51 minutes into the session. So any conclusive अल्हम्दुलिल्लाह। statement about the It's a topic? learning journey. It's a learning journey. It's a learning process. There are many wrongs before many rights, and not everything can be right. और हमारी intention और हमारी सोच human capacity के लिहाज से उतनी ही हो सकती है जितनी कि हमें इस्तिताअत है। एक चीज़ जो मैंने अभी recently सीखी, पता थी, हम लोगों को पता है ये बात, ये कोई नई बात नहीं है जो मैं करने लगी हूँ, लेकिन दुआओं में एक चीज़ को increase करें। I think we lost uh, Iram. Let's wait for a while. We lost her connection today. Stream and or Facebook is not behaving. StreamYard or Facebook is not behaving. But it was good conversation with you all. I think we lost Iram. Thank you so much, Iram. Can you hear us? Okay, never mind. So I am trying to connect with Iram, but I think uh, we lost her from one device, and I'm going to add her from the other Okay, device. Jazakallah khair. I'm here. I'm here. Sorry about that. Okay. Sorry about No आपको क्या मैं worries. सुनाई और दिखाई दे रही हूँ? अब बिल्कुल सुनाई दे रही हैं। चलें अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जो आखिर में ये बात कहना चाह रही थी, बड़ी इम्पोर्टेंट थी कि अच्छाई की तौफ़ीक और हिकमत की जो एक ब्लेसिंग है ना, वो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माँगनी है। जब हम बच्चों के लिए फ़ैसले करते हैं और हम बच्चों को अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से और अपने इर्द-गिर्द वालों के एक्सपीरियंसेस की वजह से जब हम उन्हें गाइड कर रहे होते हैं, तो हमें अल्लाह से हर वक़्त ये कहते रहना चाहिए कि या अल्लाह, तुझे बेहतर पता है और तू तू ज़्यादा बेहतर हम जानने वाला है और हमारे बच्चे के लिए हम सिर्फ़ आसानी चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल भलाई दुनिया और आखिरत की किस चीज़ में है तू जानता है, ठीक है? ये तो एक पूरी कन्वर्सेशन हो गई जो आप अपने दिल में रब से करते हो। जो मेन दुआ है वो ये है
कि या अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमा कि हमारे हाथ से हमारे बच्चे के हक़ में अच्छा हो। या अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमा कि हम हमारे बच्चे के साथ मोहब्बत और शफ़क़त से ज़िंदगी गुज़ार सकें और हमारा बच्चा हमारी इज़्ज़त करे और हमसे प्यार और मोहब्बत करे। या जैसे कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन, या कुरान की आयत की दुआ है, रब्बना हब लना, ठीक? और उसमें क़ुर्रतु अयुन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद ही बता दिया कि तुम्हारी आँखों की ठंडक हो। तो एंड देन वी से कि या अल्लाह हमारे दिलों को वुसअत अता फ़रमा और हमारे दिलों और दिमागों को हिकमत अता फ़रमा कि हम अपने डर से और अपनी जो हमारे जिसको कहते हैं ना हमारी तंग नज़रियात, उनसे उठ के तेरी रज़ा की खातिर अपने बच्चों के साथ बेहतर रिलेशनशिप्स बना सकें। बिकॉज़ आई थिंक आवर ईगोज़, so we have a lot of love for our children, but then we have huge egos too. एंड व्हेन दे बोथ क्लैश, अक्सर ईगो जीत जाती है और लव कहीं जो है ना वो पीछे रह जाता है। और हर इंसान के साथ होता है, हर इंसान के साथ हर फेज में होता है। सो द तौफीक टू बी अ गुड पेरेंट इज नॉट गिवन टू एवरीबडी। यू हैव टू आस्क फॉर दैट Hmm. तौफीक। यू हैव टू आस्क फॉर दैट। और सबसे पहले तो एक्नॉलेज, सबसे पहले तो हमें पता ही नहीं Mashallah. होता कि मुझे ये तौफीक जो है ये मुझे मांगनी है। इट्स नॉट गिवन, यू हैव टू आस्क फॉर Hmm. इट। It's it's very, yeah, very good points. But again, this is for our own kids and for ourselves, and we need to extend those feelings and those duas for the community हाँ, kids, यस, right? उनको अपना बिल्कुल, बच्चा बिल्कुल, समझे. So that was very बिल्कुल। good session. I hope internet हमसे ज़्यादा वो cooperate करता. I think it's lagging at my end because you are saying visuals are good at your end. Maybe it's my internet, but maybe it's, yeah, it's okay. We even if we don't look good in visuals, our voice is reached. I'm so happy. I'm so glad. And इसमें से आज मेरे बहुत सारे मैंने various points note किए हैं जिसपे हम अलग से sessions करेंगे. Like importance of emotional intelligence among kids, for example. That is our takeaway. And thank you so much, Iram. It Jazakallah was khair pleasure too, having you yeah. and everyone else who joined us online. Thank you. And we will, जो question answer नहीं हो सके, we will answer them through the comments. Thank Inshallah. you. Jazakallah Allah khair. Thank you so Hafiz. much, Bushra. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.